Hello guys, today I am talking about Java program in a string. Java program each word must be each word must be in capitalized. Each word must be capitalized. Write a Java program as a program write a Java program to capitalize each word in string. Okay. Capitalize this method CPITALIZE. Let's start a program. So need a first string to create a main method. String str is equal to let to pass this string creating by next method because I am using two methods. This is the first main method, must be to run the program, and creating a next method like public static string capitalize word. Okay, here is so red line because it's so return statement must be null, because here is not null. When to assign assign any variable to must be written here null. Yes. Okay, here to pass this str in here. Okay, first passing, because you know how to call the object, call it class name, then calling the creating the object to pass, compare again to calling the method like that. This type object is to be class creating the object and object dot call a capitalized word. Okay, if you want to do this, but I am using this. Okay, capt capitalize and passing the str string. Okay, this method capitalize word in the type all string method is not applicable for argument string because here is not creating any string. Again I am creating a str. Here is receive the str value. I am a full stack developer. Okay, and create a string like words. Store all string, storing it in character format. Okay, str dot display. Why using I am double slash? Because split method to capitalize each word in string by help of the split method, and the substring also I have used currently to be और each character को array में store करेंगे. Okay, let's start. After splitting the okay, then create one, because this method will be written, this variable should be written character. Okay,
कैरेक्टर हमने स्टोर किया था ना वर्ड में, अभी उसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर इसको पूरी स्टार्ट सब स्ट्रिंग मेथड, डू नो अबाउट सब स्ट्रिंग मेथड, हाउ टू यूज आफ्टर फर्स्ट यूनिट इसको पूरी स्टार्ट सब स्ट्रिंग by passing the one character, going from 0 to starting 1 and again to starting 1. Okay, let's store the all इसमें स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? फर्स्ट द टू अपर केस, हमको अपर केस में चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट हमारा अपर केस में होगा, सेकेंड हमारा लोअर केस में होगा, कैपिटलाइज। आफ्टर फर्स्ट, ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम, आर कंप्लीट द प्रोग्राम, ओके, रन। इसको डेवलप कर, वाई समथिंग इज मिस्टेक, तो लेट्स चेक। हमने तो स्ट्रिंग पास किया, डिबग में गया, स्ट्रिंग वर्ड बैकवर्ड स्ट्रिंग आफ्टर, ओके, लेट डिबग फर्स्ट, डिबग करके हम चेक करते हैं। ओके, हमारा इधर से पास हुआ था स्ट्रिंग, इधर आया, बाहर आया, और हमें रिटर्न क्या कर रहा है हम ये चेक करेंगे। ओके, लेट्स डिबग द प्रोग्राम, ओके, डिबग करते हैं। हमारा स्ट्रिंग इधर आ गया, आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ओके, कैपवर्ड यस में स्टोर किया, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, कैपवर्ड के अंदर क्या स्टोर हुआ है, अभी तक फुल आ गया है। ओके, ओके, क्या रिटर्न किया हमने? ओके, it will be return developer line, ओके, मतलब हमें कैप वर्ड को ऐड करना होगा। स्टार्ट द डिबग एंड रन द प्रोग्राम। All each word starting word will be capitalized, but no in space. After adding the space, again to run the program and see the output. And full stack developer. Okay, perfect. This is a program, guys. Thank you.